हम गेट का प्रिपरेशन सीरीज़ में आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं सीमेंट। तो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में सीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप कंक्रीट बनाते हैं या फिर इवन आप पीएससी बनाएं, सीसी बनाएं, तो किसी भी तरह का कंक्रीट बनता है तो उसमें सीमेंट की आवश्यकता होती है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट मैं कोशिश करूंगा कि 30 to 45 मिनट का ही सेशन रखूं, उससे लंबा ना रखूं। तो 30 मिनट्स मेरा चैलेंज है, 30 मिनट में मैं कंप्लीट करूंगा। चलो तो देखिए आप देखिए सीमेंट है सबसे पहले। तो सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो बेसिकली हम जो सीमेंट के बारे में डील करेंगे वो पोर्टलैंड सीमेंट ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा, तो पहला जो ट्रिक है कि लॉर्ड साई मस्त है, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखने का तरीका है, एल से लाइम होगा, एस से सिलिका, ए आई को आप देखो, ए से एलुमिना है, आई से आयरन ऑक्साइड है, और एम ए एस टी है, एम से मैग्नीशिया, ए से एल्कली, और टी टी सॉरी एस से आपका हो गया फिर क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ये एल साई एम ए एस और टी साइलेंट रखो, या फिर एस टी को बोल दो सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें रहते हैं लाइम। तो लाइम होता है 63%, सिलिका 20%, एल्यूमिना 6%, आयरन ऑक्साइड 3% एंड मैग्नीशिया 2%, और ये दोनों लगभग 1-1% रहते हैं। एग्जैक्ट बात करें तो अल्कली 1% और SO3 जो सल्फर ट्राइऑक्साइड जिसका केमिकल नेम है 1.5%। ओके, तो मैंने यहाँ एक ट्रिक बनाया था, लॉर्ड साई मस्त है। एल फॉर लाइम 63, एस फॉर सिलिका 20, ए फॉर alumina 6%, आई फॉर आयरन ऑक्साइड 3%, ओके, एम फॉर मैग्नीशिया 2%, ए फॉर alkali 1%, ओके, एंड एस फॉर SO3 1.5%। ओके, सो सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी जुड़ रहे हैं फटाफट शेयर कर दें इसको। ऑक्साइड कंपोजिशन, एवरेज, फंक्शन और एक्सेस अगर क्वांटिटी में रहता है तो उससे क्या फ़ायदा है वो हम लोग देखेंगे। तो आइए, तो विजिबल है, आगे आइए। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है लाइम, इसका केमिकल नेम है CaO। 60 to 65% होता है ये, और एवरेज बोलें तो 63। इस ये क्या कंट्रोल करता है, इसका फंक्शन क्या है बेसिकली, टू कंट्रोल द स्ट्रेंथ एंड टू कंट्रोल द साउंडनेस। ओके, अगर डिफिशियंसी होगा, कम मात्रा में रहेगा तो क्या इसमें मिलेगा, स्ट्रेंथ इसका डिक्रीज हो जाएगा, सेटिंग टाइम भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, एक्सेस क्वांटिटी में रहेगा तो क्या होगा, अनसाउंडनेस होगा, लाइम जो है अनसाउंड होगा, ठीक है। सिलिका, अब देखो जो सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो ज़्यादा मात्रा में आपका पोर्टलैंड सीमेंट में पाया जाता है वो होता है सिलिका। 17 to 25% नियर बाई आपको हो अप्रॉक्स में, तो एवरेज 20%। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्पार्टिंग द स्ट्रेंथ। ओके, इन एक्सेस अगर क्वांटिटी में अगर रहेगा तो ये स्लो सेटिंग करवाएगा, है ना। तो मैंने शॉर्ट में इधर साइड लिख दिया, तो मैं फटाफट कंप्लीट करूंगा। एल्यूमिना जो है 3 to 8 6%, क्विक सेटिंग, लोअर्स द स्ट्रेंथ इफ इन एक्सेस। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 0.5 to 6%, okay, 3% average, color plus fusion of different ingredients, and it acts as the flux, okay. So if excess quantity, again it will be lowering the strength. Okay, the next one, magnesia MgO, composition 0.5 to 4%, and if average 2%. Color and hardness it causes, okay. If in excess it will cause in crack in the mortar, and it will be making the cement more unsound, okay. Next one is magnesia MgO, okay, 0.5 to 4, 2% average, color and hardness imparting property. If in excess, it will causing the crack in mortar and it will make cement unsound. Okay, moving to next, alkali. Alkali is nothing but your Na2O, Na2O and H2O, means water and sodium oxide. Okay, 0.1 to 0.5 to 1% is average 1%, and the residue to function is residue. Okay, it will be causing efflorescence and cracks. Next one is sulfur trioxide, which is the final one, which is in the least amount, you can say 1% both are there, okay, but the least you can say alkalis. Second list is sulfur trioxide, 1.5% average, and it will make the cement unsound. Okay, the sulfur trioxide will be making the cement unsound. So we saw unsound in two cases. First one was your lime, which was making it unsound, and the second was in the case of sulfur dioxide, it also making cement unsound. Okay, moving further, we can conclude
So we can conclude the point that if there is strength strength factor, strength responsibility is taken by lime and silica. So I have summarized here, you can see here. Okay, is it visible? Okay. Strength caused by lime and silica. Setting means quick setting caused by alumina. Okay, so this is very important. Has been asked in many previous examinations also, which are conducted in multiple sets. Okay, multiple shifts. Next one is hardness. It is caused by your magnesia and iron oxide. So magnesia and iron oxide will be causing the hardness. Soundness is caused by sulfur, lime, and magnesia. Okay, initial setting time, it is caused by your gypsum and silica. So initial setting time, gypsum and silica. Quick setting, alumina. Strength, lime, silica. Hardness, magnesia, iron oxide. And the soundness, three components. What are the three components? Tell. Sulfur, lime, magnesia. Okay. Next, moving to the next page. So all the credit goes to Dhyanpal sir, who created such a beautiful notes, and I did print, and I am dictating it for you guys. Okay. So at the last you can conclude this in 1.5 or 2 x speed, and just mug up all the points what is been telling, what is been told. Okay. So the next one is your final. So here we would be dealing with the important tests. Okay. So important tests, important tests on cement. Okay, so those who have joined, please share to the maximum. Okay, share in all your maximum groups which you have joined. Okay, first one is fineness test. So in the fineness test, purpose is to measure the mean size of the grains. Important points is first method is in this case sieve method, by which we can measure the fineness. Second one is a permeability method, and third one is sedimentation method. Under the sieve method, we use 90 micron sieve. So it is very important question. 90 micron sieve used in the sieve method, and we find the percentage residue obtained. Okay. Second one, air permeability method. In this, nuts and blade method is used, and the last one, sedimentation method. Wenger turbidity method is used. In air permeability method, fineness is measured in centimeter square per kg. Okay, so we would be dealing various type of cement and percentage residue by weight and SSA. It is a very important property, specific surface area, which has been asked in multiple sets examinations. A specific surface area unit, what is this? Centimeter square per kg or centimeter square per gram. So we would be reporting the OPC, PPC, and RHC in terms of SSA in centimeter square per gram. Okay, so first one is OPC, percent residue 10%, PPC 5%, RHC 5%. So PPC and RHC 5%, and OPC has more residue 10%. Okay, next one, SSA, specific surface area. OPC 2250 centimeter square per gram, PPC 3000 centimeter square per gram, RHC 3250 centimeter square per gram. So now only 2 students have joined. Please share to the maximum groups and your friends, so that they all can get benefited. We are bringing important marathon series. Okay, so next, consistent test to find the quality of water to form a paste of normal consistency. Wicket apparatus we will be using. Okay, wicket apparatus, you can see the trapezoidal type. Here it is 40 mm, and here it is 5 to 7 mm. Okay, 10 mm dia plunger is there, 50 mm length. Initial setting time 0.85 percentage P, 0.85 times P percentage. Okay, initial setting time purpose is to get the IST, initial setting time. Okay, the wicket apparatus we are using here, a square needle we would be using 1 mm by 1 mm. Very important discussion going on, guys. Share to the maximum. I am again repeating. Note OPC IST minimum. Okay, so initial setting time of OPC is what? 30 minutes. Only 30 minutes would be. This is a very important. It is has been asked in multiple examinations. 30 minutes is the initial setting time for the OPC. Okay, the next one, final setting time. We use this test to get the final setting time. Okay, 0.85 times P is there, P percentage, and wicket apparatus we would be using 5 mm dia annular ring. Okay, OPC FST is maximum 10 hours. Okay, अरे उसको ग्रुप में डालो ना से बोलो. Soundness, next we would be dealing with the soundness test.
Okay, so what we saw earlier, we would be dealing that wicket apparatus we use in initial setting time also, and in the final setting time also. In the initial setting time there was a square needle we were using, and in the final setting time we are using the 5 dia annular ring. Okay, so OPC IST and OPC FST. IST 30 minute, or this was 30 minute, and this is 10 hours. So, okay, so OPC IST is your 30 minutes and OPC FST is your 10 hours. Okay, soundness test. Let's see. Let's move over to the soundness test. Here, the percentage of water we would be using, 0.78 p percentage. What is the function to check the soundness of cement? Means the volume change after setting of the cement. Okay, here we would be dealing with the two apparatus. First one is Lee Chatelier test, and the second one is autoclave test. Lee Chatelier test is for the lime only. Very important question, for the free lime only. Okay, and autoclave for the free lime and magnesia. In the Lee Chatelier, it is not greater than 10 mm, and autoclave not greater than 0.8 percentage. Okay, no test for sulfur has been mentioned. Okay, next one is compressive strength test. So moving ahead, compressive strength test. In this, what is the percentage of water? P by 4 plus 3 percentage, and P by 4 plus 3 percentage water is there. And to check the compressive strength of OPC, you can see is it has been short written. I can show it for you. I am dictating. Okay, so grade is mentioned: 3 day plus minus 1 hour, 7 day plus minus 2 hour, and 28 day plus minus 4 hour. So for grade 33, it is 16, 22, and 33. For grade 43 is there: 22, 33, 44. And for grade 53, it is 27, 37, and 53. Okay, so in this, basically what we will be doing, we will be taking a cube of 50 centimeter square surface area, means side equal to root 50 centimeter. Take cement is to sand ratio 1 is to 3, minimum 3 cubes taken, 27 plus minus 2 degrees Celsius. Cube is cast in 2 layers in the leak proof method. Okay, so there would be a leak proof method. Tensile strength test, or P by 5 plus 2.5 percentage. To get the tensile strength, minimum 6 brigade would be used. And in the case of OPC, for 3 days it is not less than 2 megapascal. For 7 days it is not less than 2.5 megapascal. Okay, what moving to the next, heat of hydration test. Okay, in this we are using calorimeter method. First one is rate of hydration. Trick is 4 minus 3 equal to 1. Okay, 4 3 1 4 3 1 2. 4 minus 3 equal to 1, fit 2. Okay, so first one would be your C4AF for 4, for 3 C3A, for 1 here it is C3S, and for 2 here it is C2S. Okay, all right. So you can see the graphs also of on the x-axis there is log of time. Log of time is there on the x-axis, and on the y-axis there is a fraction hydrated. Okay. Next you can see the rate of heat evolution. If the equivalent volume amount of oil taken, then trick is 3 plus 1 equal to 4. Okay, here it is the rate of hydration. Hydration means water ability. Okay, so 4 minus 3 1 4 3 1 2. So you have to remember the sequence also. What would be the sequence for rate of hydration? Rate of hydration is maximum for 4, means C4AF. And rate of heat evolution. Heat evolution, for heat evolution, rate of heat evolution, this is maximum for the 3, but that is C3A. So you have to just remember that 4 minus 3 equal to 1, and here 3 plus 1 equal to 4. 4 minus 3 1, 3 plus 1 4. Okay, 3 1 4 2. 3 plus 1 4, and then what was the remaining? 2. Okay, so C3A has highest rate of heat evolution, C3S less, C4 AF lesser, and the C2S has the least one. Okay, in the heat of hydration test, we would be reporting the rate of evaluation in the joule per gram. Okay, for C3A it is 865, for C3S it is 500, for C4F it is 420, and for C2S it is 260 joules per gram. Okay, a specific gravity test, Lee flask we would be using. And one important note is there, that OPC specific gravity is nothing but 3.15. Okay, so this is very important question. That here I have also written, see, a specific gravity of OPC equal to 3.15. Next, moving to the next page.
Now only two pages are remaining, so be consistent, man. Only I can say this thing. Okay, now we will be dealing with the bogies compounds. Okay, bogies compounds are the constituents of the cement, you can say. Okay, so there are tricalcium silicate, dicalcium silicate, and there is tricalcium aluminate, and next one is tetracalcium aluminate ferrite. Okay, C3S, C2S, C3S, C4F. Okay, coming to C3S, also known as halite, average percentage 40 percentage, composition 30 to 50 percentage. Dealing with the properties, it is best cementing material. It would be giving the earliest strength. Use is in the road works, cold places. You can use like in the places where there is heavy cold is there. There you can use for early strength. You can use the C3S constituent in the maximum. Okay, prefabrication work. Okay, resistant to freezing and thawing is also there. Next one is C2S, Belite. C2S is also known as Belite. A, B, C, you can say A, B, C, D, E, F. E is missing, only E is missing. Okay, so you can remember the sequence also. Okay, A, B, C, D, E, F. Okay, D and E are missing. D and E are missing. A for Elite, B for Belite, Celite, Felite. C3S, C2S, C3A, C4F. Okay, moving to the next. So belite, it is responsible for the late strength used in dam, bridge, for ultimate strength reserve, resistance to chemical attack. Okay, tricalcium aluminate. In this case, it would be used for the flash set. Due to alumina, it gives quick setting. Most responsible for the initial setting time, and it is also gives resistance to the sulfate attack. Okay, moving to the next one, C4AF phthalate. Average percentage 8, and the composition is 6 to 10 percentage. Property is poorest cementing material, and it would be responsible for the flash head but generates the less heat. So moving to next, let's move to the next. Difference between flash set and false set. So two type of set are there. One is flash set and the another one is false set. Okay, so in the flash set, what is there? Quick set, rapid development of permanent rigidity along with high heat of evolution. Okay, so 2 points are there. 2 points are there: permanent rigidity, high rate of evolution. So important. And in the flash set, rapid development rigidity means premature stiffening or hardening in the fresh mix cement, paste, mortar, concrete with the no appreciable evaluation of it. So what are the points you have to be remembered about in the false set? Rapid development of rigidity, um, then no appreciable evolution of the heat. What are the regions for the flash set and what are the regions for false set? It is written. I am dictating it for you. Flash set, in the flash set, C3A would be increasing, gypsum would be decreasing, and in the presence of there are presence of alkalis also. Okay, so that's why flash set occurs. Okay, so those who have joined, please share. And the next is false set. In the false set, regions are: first one is intergrading, too hot clinker, and the second one is gypsum dehydrates. Okay, so gypsum dehydrates and it is forms the gypsum hemihydrate, means CaSO4 half H2O it would be forming, and it is due to also presence of alkalis. So first false set occurs. Okay, moving to the next one. तो अब हम लोग, तो जिनको भी अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा हो, एक बार मैसेज कर दें, मैं हिंदी में डिक्टेट करूंगा. इंग्लिश में इसलिए बोलता हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों को समझ में आए, हमारी ऑडियंस साउथ वाले भी समझ पाए. चलिए नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ सीमेंट में आते हैं. तो टाइप्स ऑफ सीमेंट में सबसे पहला, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है, तो कुर्सी की पेटी बांध दीजिए. ये लास्ट टॉपिक है सीमेंट का, और हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे कुछ ही मिनटों में. ठीक है, तो चलिए आइए, मेरे पास 12 मिनट्स हैं. 12 मिनट्स में आपको मैं 12 टाइप के सीमेंट्स के बारे में बताऊंगा. ठीक है, तो देखो, सबसे पहला है RH रैपिड हार्डनिंग सीमेंट. अर्ली स्ट्रेंथ देता है ये. C3S की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, लगभग 50% तक, और इसमें C2S कम होता है. लेस C2S मोर C3S गिव अर्ली स्ट्रेंथ. नेक्स्ट, इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं? वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे मेरे को अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए होगा, मतलब चाहता हूँ कि स्ट्रेंथ तुरंत आ जाए. जैसे रिपेयर ऑफ रोड ब्रिज, तो रोड और ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में मैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करने वाला हूँ. ओके, नेक्स्ट, और एक ऐसा भी केस है कि स्ट्रक्चर जहाँ पे आप लोड अप्लाई कर रहे हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लोड इज अप्लाइड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो मैंने इसको समराइज कर दिया RH का. रिपेयर ऑफ रोड ब्रिज फॉर अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, एंड द सेकंड वन इज स्ट्रक्चर वेयर द लोड अप्लाइड इज इन शॉर्ट टाइम स्पैन.
The next one is extra rapid hardening cement. Okay, so in this rapid hardening cement you would be adding with along with what, 2% CaCl2. CaCl2 is nothing but calcium chloride, which is a very important accelerator, which we would be discussing in the upcoming videos. Okay, maximum 20 minute we are giving for the mix, transport, placement, compacting and finishing. Okay, then it is used for the special purpose, repairable in cold weather, not used in pre-stressed concrete. Function of extra rapid hardening cement is I have summarized a special purpose, that is the cold weather. Okay, and it is not used in PSC. So I am writing PSC. Okay, not used. Okay, not used in PSC. Okay, what is the next one? It is your SRC, sulfate resisting cement. C3A decrease less than 5%. C3S nearly equals to C2S, which is nearly equal to 40% approx. It would be used in a structure in seawater, marshy land, seaways, canal lining, culverts, siphon, marine structure. Okay, it will be temperature, we are discussing temperature not greater than 40 degrees Celsius to be maintained. So I have summarized function of SRC: marine and adverse condition, structure which are located near the marshy land, sea, canal, and related to sewage, culvert, siphon. There, so this is a very important type of cement. I am again speaking. Must see this. Okay. Next one is super sulfated cement. In this, C3A is less than 3.5 percentage. Temperature not greater than 40 degree. Should not be used with any admixture. So it not to be used with any admixture. So important point, less C3A, T not greater than 50, no admixture to be used along with it. Okay, so अब हम लोग पांचवा पॉइंट पे आ जाते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट. हाई एल्यूमिना सीमेंट की IST जो होती है, FST जो होती है, वो कितनी होती है? तो 3.5 मतलब 3.5 से 4 घंटा इसका इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है, और फाइनल सेटिंग टाइम 5 से 5.5 घंटा रहता है. ठीक है. अच्छा, हाई एल्यूमिना सीमेंट जो आपका होता है वो किससे बनता है? तो फ्यूजन ऑफ लाइम प्लस बॉक्साइड. तो हम लाइम और बॉक्साइड का फ्यूजन करवाते हैं, जिससे आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट बन जाएगा. उसके बाद क्या है? यूज फॉर द रिफ्रैक्टिव कंक्रीट. ओके, हम लोग इसको रिफ्रैक्टिव कंक्रीट के लिए भी यूज करेंगे. इन इंडस्ट्रीज फॉर प्री कास्टिंग वर्क, प्री कास्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे. उसके अलावा क्या है कि इट गिव्स एक्सट्रीम रेजिस्टेंस टू द फायर. ओके, तो जहाँ पे फायर प्रोन एरियाज होंगे, वैसे बिल्डिंग या फिर वैसे प्लेसेस, वैसे गोडाउन्स जहाँ पे फायर का चांसेस ज़्यादा रहता हो, वहाँ पे हम लोग हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज़ करके वो बिल्डिंग, वो प्लेस बना सकते हैं. उसके बाद केमिकल, जहाँ पे केमिकल हम लोग प्लेस करते हैं वहाँ हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज़ करेंगे. एसिड अटैक जहाँ पे होने का चांसेस रहेगा वहाँ पे भी हाई एल्यूमिना यूज़ करेंगे. सल्फेट अटैक जहाँ होगा वहाँ पे भी हाई एल्यूमिना. तो मल्टीपल फंक्शंस हैं इसके, तो आप ये ध्यान में रखेंगे. जहाँ कभी भी आपको दिखेगा रिफ्रैक्टिव कंक्रीट, रेजिस्टेंस टू फायर, केमिकल, सी वाटर, एसिड अटैक, सल्फेट अटैक, देयर यू विल बी पुटिंग द ऑप्शन नथिंग बट योर एल्यूमिना सीमेंट. ओके, द नेक्स्ट वन, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लो हीट सीमेंट. तो लो हीट सीमेंट में इनिशियल सेटिंग टाइम आपका 1 घंटा होता है. अच्छा, इसमें हीट इवोल्यूशन कम रहती है. C2S की मात्रा हम लोग इसमें बढ़ा देते हैं. C3A और C3S एकदम घटा देते हैं. C4F तो रखते ही नहीं, उसके बारे में नहीं लिखा. ठीक है, इसको हम लोग मास कंक्रीटिंग के लिए यूज़ करेंगे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि मास कंक्रीटिंग में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? लो हीट सीमेंट. ओके, नेक्स्ट वन, क्विक सेटिंग सीमेंट में आ जाओ. तो IST इसकी होती है 5 मिनट, FST इसकी जो होती है 10 मिनट्स. ओके, तो इसमें क्या है? जिप्सम फ्री. इसमें जिप्सम जीरो रहता है. जिप्सम का अमाउंट कितना होता है क्विक सेटिंग में? जीरो. उसके बाद ये सेट करेगा क्विकली, इट विल बी सेटिंग क्विकली बट नॉट हार्डन क्विकली. क्विकली सेट तो कर जाएगा बट वो जल्दी वो हार्डन नहीं करेगा, मतलब जल्दी वो कड़ा नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ, यूज इन अंडर वाटर कंक्रीटिंग. ओके, जहाँ पे हमको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना हो, अंडर वाटर के अंदर कुछ स्ट्रक्चर बनाना हो, जैसे आपने देखा होगा बंगाल में अंडर वाटर मेट्रो बन रहा है, तो उस केस में क्विक सेटिंग का हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे IST 5 मिनट, FST 30 मिनट्स होती है. उसके बाद रनिंग वाटर कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ करते हैं. मैं आपको एक वीडियो में दिखाया था कि जहाँ पे एक रनिंग वाटर के ऊपर पुल बन रहा है, तो वहाँ पे भी इसी तरह का सीमेंट यूज़ किया जाता है. तो QSC, क्विक सेटिंग सीमेंट, अंडर वाटर कंक्रीटिंग. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट वन, PPC, made by pozzolanic material like your rice husk, surkhi, fly ash, shell, etc. Used in the mass concreting and the places of high temperature. Where there are high temperature, there would be using the PPC, Portland pozzolana cement. Okay, so function of PPC is mass concreting and place of high temperature. Okay, air entraining cement. In this, it is written it is made by air entraining agent. What are the air entraining agent? Like oil, fat, wood resin, winsol resin, etc. Okay, it has the greater resistance to freezing and thawing action. Okay, and the air entraining cement has higher IST, FST than OPC. It would be improving the workability, reduce the strength, high IST,
FST, then OPC. Function of AEC, what is the function of air internally cement? Freezing and thawing, structure decreases, workability increases. Okay. So the second last one is your blast furnace slag cement. Okay, based for marine works, for pipe carrying water containing chemicals. Next one, sewage pipe, work exposed to sulfate environment in the soil or in groundwater. Okay, so I've written it BFSC, blast furnace slag cement, used in marine, sewage, chemical and sulfate environment. Four circumstances. Okay, the last one which we're dealing with, white and colored Portland cement. So white and colored Portland cement we are using for the floor works. Okay, so as the name mentions, white. Okay, white cement, colored cement. Okay, the pigments are used for the flooring of work, for the flooring works, plastering of walls and the ornamental work. So overall what we can say, there are 12 type of cements. I am again repeating, 12 type of cements. First one, rapid hardening for repair road bridge. Okay, extra rapid, special purpose, cold weather. Sulfate resisting, what? Marine, adverse, marshy, sea, canal. Next one is super sulfated, less C3A, time not greater than 40 minute. Okay, and 40 degrees Celsius, sorry, temperature not greater than 40 degrees Celsius, no admixture. Alumina, lime bauxite, it's called HSC. Low heat cement, mass concreting, quick setting, underwater concreting, PPC, mass concreting, and the place of high temperature. Air internally cement for freezing and thawing of a structure, and increases the workability and strength decrease. Okay, blast furnace slag, marine, sewage, chemical, sulfate, and the white are in the ornamental work and the flooring plastering. Okay, and what earlier we discussed is your bogies compound, different type of bogies compound elements, C3S, C2S, C3A, C4F. C4AF, less heat, this is also flash heat. Okay, so if we are asking for flash heat, C4AF. Okay, and also C3A, mostly this is the C3A, this which is causing the flash set, very important. C3A which is causing the flash set. Okay, C2S, late strength, it will be causing the late strength, but only you can see the important point is this, resistant to chemical, very important question is asked in previous examinations also. C3S, what? Poor centimeter, but what the point you have to remember is the early strength, and the second one, resistance to freezing and thawing action, used in road, cold and prefabrication work. Here we discuss the flash set, fall set, है ना. फ्लैश सेट में क्या हमने डिस्कस किया, रैपिड रिजिडिटी आएगी, हाई रेट ऑफ इवोल्यूशन होगा, हाई हीट इवोल्यूशन होगा, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रिजिडिटी आएगी. ओके, नो अप्रिशिएट इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा. रीजन इसमें दिया हुआ C3A ज़्यादा होता है, इस कारण से आपका फ्लैश हिट हो जाता है. जिप्सम कम होता है, प्रेजेंस ऑफ अल्कली होती है. नॉर्मली अल्कली में भी बात करें तो सल्फेट्स की मात्रा काफ़ी आ जाती है, जिस कारण आपका फ्लैश हिट हो जाता है. ठीक है, तो अल्कली के कारण फ्लैश हिट आपका होता है, जिप्सम कम रहता है, C3A बढ़ता है, उसके कारण फ्लैश हिट हो जाएगा. फॉल सेट में आइए बात कीजिए तो इंटर ग्राइंडिंग हॉट टू हॉट क्लिंकर के कारण हो जाएगा, फिर आपका अल्कली का प्रेजेंस के कारण भी हो जाएगा. ठीक है, और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, एक बार मैं वाइंड अप कर दे रहा हूँ. डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट पढ़े थे हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ओवरऑल हमने 12 सीमेंट देखा और 11 सीमेंट देखा और 9 टेस्ट देखा. तो 9 टेस्ट में हमने क्या क्या देखा, फाइनेंस टेस्ट, फिर आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट देखा, फिर इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट देखा हमने, फिर आपका देखा मैंने फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट बताया आपको, साउंडनेस टेस्ट बताया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट बताया, फिर आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट और स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है, तो आप देख सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, एंड द फर्स्ट पेज which we discussed, I am winding it up. Okay, because 2 minutes remaining and I will be winding up. First, what was the trick? Lord's eye must है. Okay, L 63, S silica, L for lime, S for silica, A for alumina, I for iron oxide, M for the magnesia, A for the alkali, and ST for the sulfur trioxide. Okay, each component has been mentioned. Average, lime 63, silica 20, alumina 6, iron oxide 3. Okay, it is asked iron oxide percentage 3%, magnesia 2%, alkali only 1, sulfur dioxide 1.5%. So least amount of alkalis is there, least is alkali and the maximum is your lime. Okay, okay, this is important one, lime. And what it is calling, lime strength, soundness, deficiency causes strength decrease, setting time decrease. Silica for strength, alumina for setting, this is for color and fusion, this is for color and hardness, alkali residue. So magnesia is for color, iron oxide is also for color, but mostly for the fusion of different ingredients is there. Okay, acts as the flux. This I am asked also. Okay,
Next one, alkali for alkali function is residue type. Okay, and it would be, if in excess, it would be causing efflorescence and cracks. This is very important question. Which component is causes efflorescence? So it is alkali. Okay, what is the next one? Sulfur trioxide. It makes the cement unsound. 1.5%. Okay, last what we discussed, strength. For strength, lime and silica. For quick setting, alumina. For hardness, magnesia and iron oxide. For soundness, sulfur, lime, magnesia. For initial setting time, this is gypsum and silica. Okay, so thank you guys. Share it to the maximum. Keep studying, keep rocking. Bye. मेरा ही स्कूल में आके पढ़ने लग जाएगा फिर वो।